Hello everyone, welcome back to Ansarkari. In today's video, we will discuss the important newspaper articles from the newspaper of 24 October 2024. So the first article again is regarding the India-China relations. So कैसे we have seen that there was a bilateral visit and Modi and the Chinese counterpart Xi Jinping. So they had a meeting and they welcomed the agreement for the resolution on the military standoff at the line of actual control. So we had already discussed कि कैसे there were several agreements made with regard to the patrolling. But again, the deployment of troops है, उसके ऊपर there was no decrease that was made. And better coordination and with the proper negotiations, there was a time or a proper schedule that was decided here. So maintaining peace and stability on the border should remain our priority. So mutual trust, mutual respect, and mutual sensitivity. तो long buffer time था बीच में of 5 years where we had no visits of the or no meetings of the leaders bilaterally. तो this is a way forward for peace. बॉर्डर क्लैशेस की अगर बात करते हैं तो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था तो 2017 में एंड फिर गलवान वैली स्टैंड ऑफ इन 2020. तो इसमें भी देयर वर lives that were lost of the military men. Next, 2 years after launch, Delhi government signs MOU with Education Ministry to implement the PM Shri scheme. So we had seen this tussle between the center and the state with regard to the distribution of funds, the allocation of funds with regard to policies of other implementations. Because यहाँ पर the Delhi government it wasn't implementing the PM Shri scheme, so the funds they were seized for the other areas. So now there is a memorandum of understanding that has been signed with the Ministry of Education for the implementation. तो ये लाइन में है इन द विद द NEP 2020 एंड ओवरआर्चिंग स्कीम है समग्र शिक्षा यानी कि होलिस्टिक एजुकेशन. तो इसका एम को लेकर चलना. Further regarding education itself, we can see that the recent trends are that are regarding the increase in the enrollment of the women children. So that is one major thing. Further, we also discussed about cases of welfare schemes are like providing bicycles. That played a major role in increasing the enrollment here. And also the new proposals are regarding the open book test, that is OBT, that we are trying to introduce, an improvement of infrastructure R&D, and further linking the education with job related skills. So these are the areas that we can discuss with regard to education. Further, LG expresses regret. So he says that no one told him quote not was required to cut trees. So was it actually the truth, या फिर it is just या फिर he is just trying to cover it up? So we can discuss about it कि क्या क्या various laws होते हैं. And here the argument is regarding the illegal felling of trees by the DDA in the capital's protected ridge area for the widening access. तो deforestation की हम बात करते हैं कि कैसे for infrastructure we are cutting the trees and reducing the forest area. तो long term इनके impacts हो सकते हैं. And here better regulation is required so that such things they don't happen. And ये भी it was the NGOs who opposed this. उसके बाद it was seized and then the case was filed here. The protection of these areas becomes very essential. And forestry and biodiversity conservation के लिए biodiversity hotspots create कर जाते हैं, endangered species को help मिलती है, forest carbon stock
तो ये फॉरेस्ट बेस्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। एंड कैंपा, कैंपा फंड की जब हम बात करते हैं, तो दे आर कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, eco restoration, carbon credits, green India mission. These are all the major key terms that we can mention here, the major initiatives. Important acts की बात करते हैं तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इट प्रमोट्स द एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट कवर टू एटलीस्ट 33% of the land area. So these are the major initiatives here. So after another makeover, Karnataka's luxury train Golden Chariot set to back on the track soon. तो यहाँ पे there is this new concept of a luxury train. जैसे for some even traveling in train might be a luxury due to the cost. Further regulation की यहाँ पे बात कर सकता है tourism को promote करने के लिए, and जो foreign tourist होते हैं उनके लिए भी it can be an affordable alternative to travel comfortably and with a in lavish way. So luxury train again, railway vacations and these are here. So tourism, hospitality, travel, transportation. These can be the key terms here. और रेल टूरिज्म का रिसर्जेंस है ये, एंड सस्टेनेबल ट्रैवल की हम बात करते हैं, कल्चरल प्रिजर्वेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर, एंड इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, तो IRCTC, दिस इज देयर. Further, the Manipur crisis, the issue of managing diversity. So, we have seen recently that there are several cases जहाँ पे diversity again is a very beautiful thing, but it also comes with certain challenges. And main challenge is that of accommodation. क्योंकि जो differences होते हैं, instead of creating interdependence, they most of the times lead to clashes. First and major most importantly on the basis of the culture or the religion, या फिर जो ethnicity होती है of the groups उनके basis पे. And second is regarding the other factor, जैसे कि economic factor हो गया, the allocations, the power, the representation. So all these other areas they come in another way. यहाँ पर this article is focusing upon the Manipur case, कि कैसे within the state itself, the intra-state dispute, जहाँ पे कुकी, मीटिस etc. are included here, are the important stakeholders. तो इसके लिए कैसे जो constitution है, how that is a living and a transformative document, और कैसे वो evolve कर सकते हैं अपनी capacity को to adapt to these demanding circumstances. तो यहाँ पर demanding circumstances क्या है? They are regarding the accommodation and peace making. तो जब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स में, तो जो सेंटर स्टेट होता है कई सारे स्टेप्स लेता है, बी इट रिगार्डिंग द ट्रीटीज या फिर इवन अकॉर्ड्स या पीस पैक्ट्स. तो ये सब चीजें साइन होती हैं इवन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉर द फॉर क्रिएटिंग पीस इन द स्टेट. सिमिलर लाइंस पर ही जैसे हम प्रोविजन देखते हैं विद इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल. तो फिफ्थ शेड्यूल में इट इज रिगार्डिंग द शेड्यूल्ड एरियाज, तो 10 स्टेट्स में है वो. एंड सिक्स्थ शेड्यूल में हम बात करते हैं ट्राइबल एरियाज, जो करेंटली सिर्फ 4 स्टेट्स में है. तो स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट करे जाते हैं स्पेसिफिकली फॉर द स्टेट्स. अगर हम देखें तो just for the these are separate initiatives by the constitution. तो here we can see the example of सिक्किम. तो 1975 में जो एक्सेशन हुआ था, इट लेड टू द इंक्लूजन ऑफ आर्टिकल 371F. तो इसमें अगेन स्पेशल प्रोविजंस इंक्लूडेड है. तो ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन. तो अगेन डाइवर्सिटी मैनेजमेंट यहाँ पे कीवर्ड हो जाता है.
फॉर द त्रिपुरा के में भी ये केस था। तो सिक्स शेड्यूल में तो जो ट्राइबल एरियाज है तो उससे डिवॉल्विंग पावर होती है टू डिस्ट्रिक्ट एंड द रीजनल काउंसिल। जैसे अगर हम देखते हैं तो डीएसी दैट इज द डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो ये इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर जाते हैं स्पेशली जो कि एरिया जैसे कि एजुकेशन हो गया, सोशल कस्टम, एलियनेशन ऑफ लैंड, यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, इन सब एरियाज में दे कैन रेगुलेट क्योंकि उनको ज्यादा बेटर पता होता है, बेटर दे आर अवेयर रिगार्डिंग देयर ओन कस्टम्स, यूजेज एक्सेट्रा क्या उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोकल लेवल पर ही थिंग्स कैन बी सॉल्व्ड and thus preventing the conflicts. The Tripura Accord signed in 1988 between the Union government and state government and the Tripura National Volunteers. तो इससे जो इंसर्जेंसी ग्रुप्स होते हैं दे कैन ऑल्सो बी एट पीस। आर्टिकल 332 की बात करते हैं तो ये भी इंसर्ट किया जाए टू गिव ग्रेटर शेयर इन गवर्नेंस इन टर्म्स ऑफ द अकॉर्ड्स। तो हिल एरिया कमिटी, तो these are all the initiators स्पेसिफिकली। लेकिन मणिपुर के केस में क्या डिफरेंस है, सिक्स शेड्यूल में इट इज नॉट इंक्लूडेड। तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेकिन वो एक अलग लॉ की वजह से हुआ है, नॉट इन द सिक्स शेड्यूल बट द मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट 2000। तो वहां पर एक क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है इस स्टेट में, जैसे कि वीटो पावर्स होती है जो शेड्यूल ट्राइब एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मणिपुर में ऐसा केस नहीं है, इसी वजह से देयर इज अ चैलेंज। तो अगेन कैपेसिटी एंड इवॉल्वमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अकोमोडेशन। तो गुड कीवर्ड्स इन दिस आर्टिकल एंड न्यू आउटलुक कि मणिपुर में क्या डिफरेंस है। तो दिस एक्ट वी कैन रिमेम्बर, मणिपुर हिल एरियाज एडीसी एक्ट। Further, the shifting stands with the global supply chains. So when we discuss about the supply chain management, क्या इसमें सबसे ज्यादा essential होता है? Again, there are several areas that we shift up our focus upon. Be it the backward forward linkages, etc. So these are the areas. And यहाँ पर जो rising concern है regarding the supply chain management, that is regarding security. कि क्या जो products a country is importing, so are they safe enough with regard to the technologies? Because again वो किसी और country में manufacture हुए हैं and they can have certain tools etc. Past के अगर हम incidents में देखें तो here we have seen the US the pagers that were there by the Israel जिसमें कि explosives हुए थे, and also the US concerns regarding the automobiles that are exported by China. तो ये टू मेजर एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। तो इजराइल्स पेजर अटैक, तो देयर आर सेवरल मूव्स आल्सो दैट आर क्रिएटेड। तो की टर्म्स की बात करते हैं तो एफिशिएंसी, जस्ट इन टाइम टू रेजिलियंस जस्ट इन केस, और अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी, जस्ट टू बी सिक्योर। सॉरी। तो एफिशिएंसी के रिगार्डिंग जस्ट इन टाइम रेफर्स टू कि कैसे जो हर एक प्रोडक्ट है कहाँ उसके कंपोनेंट्स आर बीइंग क्रिएटेड और प्रोक्योर्ड, असेंबली कहाँ हो रही है एट वेरियस लोकेशंस बेस्ड ऑन द कॉस्ट। तो ग्लोबलाइजेशन का यही फायदा है कि अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज इकोनॉमी वी कैन हैव द मैन्युफैक्चरिंग और द ट्रेडिंग एंड द अदर एस्पेक्ट्स, ताकि दे आर the cheapest in the particular country and वो lowest rate पे they can be created with most ease एंड रिलायबिलिटी। तो यही किसका बेनिफिट है, तो एफिशिएंसी की यहाँ पे बात होती है। सेकंड, ग्लोबल सप्लाई चेन में हम बात करते हैं रेजिलियंस की। कैसे रेजिलियंस, व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल्फ सफिशिएंसी या फिर सेल्फ रेजिलियंस, तो उसमें हम बात करते हैं कि इंटरडिपेंडेंस को कम करना। तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी एक्सेट्रा, दीज आर ऑल द मेजर्स। थर्ड, जो अभी जो करंटली जो राइजिंग कंसर्न है इन द ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, so that is regarding the security, as I just now mentioned. So these two cases that were recently created.
एक अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो रिसेंटली तो अभी फ्यू इयर्स पहले जब 5G का रोल आउट हुआ था, तो उसमें भी देवर सेवरल कंट्रीज लाइक जो कोर कंट्रीज है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, तो दे इफेक्टिवली बैन हुआई एंड अदर चाइनीज टेलीकॉम प्लेयर्स। तो जैसे हम बात करते हैं डेटा सेंटर्स की, डेटा इज द न्यू वर्ल्ड, तो सिमिलर एरियाज में रिगार्डिंग सिक्योरिटी वी नीड टू क्रिएट रेजिलियंस। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी कौन सी ऑब्टेन करनी है? थ्रू ट्रस्ट बट वेरीफाई एंड जीरो ट्रस्ट। तो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? पीरियोडिक ऑडिट्स हो सकते हैं, ऑन साइट इंस्पेक्शन हो सकती हैं, इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, और फिर मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स कंप्लायंस विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। These are the areas here. Further celebrating the art and imagination of K.G. Subramaniam in his centenary year. So five collections of essays gather KG's critical questions like what does culture mean for the individual and the collective, and where does the true value of art lie? The post-independence trends in preserving India's art. तो here जहाँ पे जो दो मेजर चीजें हाईलाइट करी है, दैट फर्स्ट इज रिगार्डिंग द परसेप्टिव विजन, कि एक इंसान के लिए आर्ट क्या मीन करता है। इट कैन बी, इट इज डिफरेंट, जो सब्जेक्टिव है बहुत ज्यादा फॉर एवरी इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पेंटिंग को भी देखते हैं, तो डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट वैल्यूज निकल करके आता है फॉर एवरी इंडिविजुअल, दैट डिपेंड्स ऑन देयर ओन थिंकिंग। एंड प्रिजर्विंग इन इकोसिस्टम, तो रिटेनिंग द वैल्यू ऑफ आर्ट इन इंडियन सोसाइटी, दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशल। तो upholding the values etc. Also you can shed light on this post independence trends क्या है in preserving India's art. So here is his sir, so he's KG Subramaniam. तो Durbar Hall Art Gallery in Kochi. Further, center tightens norms for disability certificates. Activists they seek withdrawal. So here a national platform for the rights of the disabled. सेम पर तो पूजा खेड़कर का जो हमने केस देखा था, तो अक्यूज ऑफ फेकिंग अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो कैसे रेगुलर चेक्स दे मस्ट बी मेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एज वेल, एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन हो सकता है ये प्रोसेस, एंड ऑल्सो डीलिंग विद द creators of such fake certificates, that is also crucial. The rights of persons with disabilities rules. Next, cyber fraud losses could amount to 0.7% of GDP. So this shows कि क्या importance है of preventing such cyber frauds. जब हम बात करते हैं all these cyber crimes that happen. तो major जो countries है, scam compounds. So this is the key term that we can mention. Scam compounds in the Southeast Asian countries, जैसे कि Cambodia, Myanmar and Laos. तो ये रिजेंबल करती है कॉल सेंटर्स एंड एमर्ज एज अ हब ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। तो वेरियस टाइप्स के स्कैम्स होते हैं। वन वे इज आल्सो रिगार्डिंग द
scams related to the loans, कि कैसे their challenges are seen by the individuals. Further, OTP से related, numbers से related, कि just by the credentials, important जो details होती है उनके through these scams they take place. So awareness is very important here at the individual level, and call identification systems, कि कैसे कहाँ से कॉल आ रही है and whether it is reliable or not. पिक करना कॉल को, ट्रैकिंग, ऑटोमेटिक जो स्पैमिंग होती है या ब्लॉक कर देना कॉल को, दीज कैन बी द मेजर्स, किन किन एरियाज से आ रहे हैं, तो दीज बेटर ट्रैकिंग कैन बी डन. तो सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, वी कैन रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, इंडिया क्लोज टू फाइनलाइजिंग इंडस्ट्री कार्बन टारगेट्स अहेड ऑफ द कॉप मीट. तो 29th एडिशन होएगा ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन बाकू, अजरबैजान. तो एडवांस स्टेज पर ही इंडिया हैज डिसाइडेड the carbon dioxide emissions and intensity targets for select industries. कोल की बात कर सकते हैं, की टर्म्स लाइक phasing down, phasing out. For the renewability के ऊपर we have been focusing since long. Green hydrogen mission, national green hydrogen mission. So these are the examples here. And currently production की बात करते हैं तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है in terms of producing the renewable energy. So, with specified limit, or they must buy credits from organization that have surplus credits. So, carbon credits and Bureau of Energy Efficiency. एक बॉडी भी यहाँ पे मेंशन्ड है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इंडियन कार्बन मार्केट. तो स्पेसिफिकली जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उनके रिलेटेड है. एंड कार्बन क्रेडिट्स में वी हैव आल्सो सीन अ इनिशिएटिव रिगार्डिंग द एग्रो फॉरेस्ट्री. जब हम एग्रीकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री के इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वहां पे भी कॉमन प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स कैन बी क्रिएटेड, जिससे कि द कार्बन क्रेडिट्स कैन बी यूज्ड इन दैट फील्ड. तो कंसेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस, मोहम्मद यूनुस, ही वाज फ्रॉम Bangladesh, and he initiated this concept of microfinance. So they should refrain from doing reckless lending. So crucial role in fostering the financial inclusion, if that is the key term, कि small scale पर they are providing loans and to the needy, to the beneficiaries. तो SHGs हो गए and also the GLGs or the joint liability groups. तो identify करना how much we are lending and how we are lending, and also when we are lending. These are all the important areas. तो SHG बैंक linkage program है. There are more than 77 lakh groups with 2.6 lakh crore outstanding loans, benefiting about 10 crore poor households. तो 100 million लोगों को ये हेल्प कर रहा है. तो लखपति दीदी योजना, so that is also for the women empowerment. The joint liability groups we can remember. To small finance banks. Further, regarding the preservation, art and culture, so declaring Jama Masjid protected monument will have a substantial impact. तो here ASI submitted कि इसका impact होएगा कैसे. प्रोटेक्शन के बाद जो 100 मीटर जोन है उसमें न्यू कंस्ट्रक्शंस आर प्रोहिबिटेड, और रेगुलेटेड एरिया
जो कि 200 मीटर जोन बियॉन्ड है, प्रोहिबिटेड एरिया, all construction related activities are regulated and require prior permission. किससे? From the competent authority and National Monuments Authority, NMA. तो substantial impact होएगा of central protection on a 300-meter zone around the monument. तो important ancient monuments and archaeological sites and remains act 1958. तो conservation and restoration work of the monument. So India must guard its strategic interest after UK's handover of Chagos to Mauritius. So to be sure, Chagos का जो handover था to Mauritius is exactly the outcome India had long hoped for. तो behind the scenes role भी play करा था to encourage both sides to reach such an agreement. But while it is the continuation of the Diego Garcia base under US control as a positive, it is likely to temper its responses to project a balanced stance. तो यूके यूएस का कंट्रोल है ऑफ द मिलिट्री बेस एट डियागो गार्सिया फॉर 99 ईयर्स. तो इंडिया के लिए जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन. तो लोकेशन की बात करते हैं चारगोस आइलैंड्स की, तो जो इंडियन ओशन रीजन में है, जो साउथ अफ्रीका है उसके ईस्ट में. तो टचिंग ऑन ब्रॉडर थीम्स ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, रीजनल अलायंसेस. तो कैसे जब हम बात करते हैं डीकोलोनाइजेशन एजेंडा या फिर इवन एज अ पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल्स की जो हम बात करते हैं, तो डीकोलोनाइजेशन, एंटी अपार्थाइड, तो दीज आर दी मेजर वैल्यूज. So further here we have the strategic interest in the Diego Garcia, the geopolitical importance है इसका, and US और UK का जो military presence है for surveillance, intelligence and rapid deployment that exists here. So security concerns, maritime interest, Indian Ocean Rim Association, or concept of Sagar, security and growth for all in the region. These are the key terms that we can see here from this article. तो काउंटर बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है द बीजिंग्स इन्फ्लुएंस इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन. Therefore, even when we talk about countries like Maldives, etc., they become very crucial for India. Further, learning and nation building. So, 75th Constitution Day on November 26th. So, it is a moment to reimagine our universities. The focus needs to be on education and research relating to constitution's ideals and aspirations. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि कैसे एजुकेशन में देयर मस्ट बी अ प्रॉपर इंक्लूजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिप्शन एंड उसकी जो वैल्यूज एक्सेट्रा है उनको एनग्रेन करना among the individuals. So rather than just focusing upon the job related skills and values and learnings, we should also focus upon such constitutional values. So, desired transformation in the value system of our society can take place only when the constitutional ideas are ingrained. क्या क्या important है? Awareness regarding our fundamental rights. Further जो DPSPs है, so as to जो ये pressure groups है, NGOs etc., इनका जो role होता है, that becomes important in drawing the state attention. And most importantly, fundamental duties.
तो वन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ साइट फॉर क्रिएटिंग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो ये सोशियोलॉजिकल टर्म भी है कि हाउ द इंडिविजुअल्स दे आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड सोशल सॉलिडारिटी की जो हम बात करते हैं। तो कैसे बिलीविंग इन वन कॉमन थिंग, जो काम रिलीजन करता है, और बिलीव इन वन कॉमन थिंग एंड देयरफॉर शेयर्ड सॉलिडारिटी होती है। सिमिलर लाइंस पर ही कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो सच अ फ्रेमवर्क दैट कैन हेल्प इन इंटरेस्टिंग द इंडिविजुअल्स, जिससे फेथ इनहांस होता है एंड दस होप एंड सिक्योरिटी। तो आइडेंटिटी क्रिएशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म, तो की टर्म्स है सारी, एंड ऑल्सो सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। क्या क्या स्पेसिफिक मेजर्स जस्ट नाउ विद सेल्फ रिगार्डिंग द सिक्स्थ शेड्यूल, एंड क्या क्या स्पेसिफिक एक्ट्स एक्सेट्रा जो कि क्रिएट होते हैं जस्ट फॉर द डाइवर्सिटी मैनेजमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अकोमोडेशन, if these are to be mentioned. तो सोशल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो एज ओल्ड जो क्राइसिस है या जो एडवर्सिटीज है which have been faced by the individuals, उनको ओवरकम करना, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एज द बेसिस ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये सारे की टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोशल जस्टिस में भी अगर हम बात करते हैं तो societal structure, it can be challenged and new generation can become participants in an effort to achieve social justice. तो इगेलिटेरियन सोसाइटी का विजन, इज इट एक्चुअली पॉसिबल, या फिर जो पाथ है दैट इटसेल्फ कैन क्रिएट पीस? तो एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग द यूथ इज क्रूशल हियर। नेक्स्ट, जियो इंजीनियरिंग आइडिया, डायमंड्स इन द स्काई कूलिंग द अर्थ। तो यहाँ पे ये साइंस का है कि रिगार्डिंग कि अगर हम स्प्रे करेंगे मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डायमंड डस्ट इन द अपर एटमोस्फेयर, तो इससे अर्थ विल बी कूल डाउन एंड जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है दैट कैन बी फिक्स्ड। तो absurd साउंड कर रहा है बट इट हैज बीन पुट फॉरवर्ड अर्लियर टू। तो कैसे मटेरियल्स, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, दे हैव बीन सजेस्टेड। तो इनको क्या बोलते हैं? जियो इंजीनियरिंग, दिस इज द की टर्म हियर। और स्पेसिफिकली बोले तो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। तो अगर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की भी, तो मेजरली ये क्यों हो रही है? बिकॉज अगेन अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो हीट सन पास करता है, थ्रो करता है एट दी अर्थ, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। बट जो इंक्रीज हो रहा है इन द ग्रीन हाउस गैसेस, ये हेल्प करता है इन इस वार्मथ को ट्रैप करने में, एंड जो रिलीज होता है वो उतना नहीं हो पाता जितना the earth, जितनी heat the earth receives। तो जो energy budget है that gets created, जिसकी वजह से again global warming takes place। तो it would still be several decades before temperature stabilize, अगर global emissions zero हो जाए suddenly तब भी। तो global temperatures are already about 1.2 degrees Celsius higher than the pre-industrial period, and 2023 में as much as 1.45 डिग्री सेल्सियस वार्म। तो ये अभी करंटली स्टेटस दिखा रहा है कि व्हाट इज द करंट स्टेटस। तो ये जियो इंजीनियरिंग लार्ज स्केल अटेम्प्ट है टू ऑल्टर द अर्थ नेचुरल क्लाइमेट सिस्टम, तो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। अदर इज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी, CDR, which includes various carbon capture and sequestration methods। तो ये टेक्नोलॉजीज के नाम है that we can pick up from here। तो डायरेक्ट एयर कैप्चर, DAC, तो they seek to use large artificial trees to suck carbon dioxide from ambient air, and वो डायरेक्ट करते हैं to the storage and utilization sites। तो अगेन कार्बन स्टोरेज सीधा उसको कैप्चर कर लेना वाया आर्टिफिशियल ट्रीज। तो ये जो SRM मेथड है, द सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, तो इट इज इंस्पायर्ड बाय द वोल्केनिक इरप्शंस, जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन होती है वाटर वेपर के साथ टू फॉर्म सल्फेट पार्टिकल्स
that reflect sunlight back to space. तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन्ड है, माउंट पिनाटुबो इन द फिलीपींस 1991 में ही हुआ था, इरप्शंस हुई थी, और इसमें जो अर्थ का टेम्परेचर था वो 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था। तो दिस मेथड इज वेरी नाइस। तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वेपर से मिलता है तो सल्फेट पार्टिकल्स क्रिएट होता है विच हेल्प इन रिफ्लेक्टिंग द सन रेज। अब चैलेंज इज ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट, और नेचुरल प्रोसेस को इतने लार्ज स्केल पे मैनिपुलेट करना, अनफोर्सिन कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, डिसरप्टिंग ग्लोबल एंड रीजनल वेदर पैटर्न्स। तो सेवरल चैलेंजेस, इतना इजी नहीं है। इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो अगेन वी कैन focus more upon the natural method itself. तो terms we have mentioned SRM, solar radiation management, फिर CDR, carbon dioxide removal technologies, and direct air capture, artificial trees. These are the key terms here. तो ये एस्टेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, तो ये इन्फेक्शन है आफ्टर ईटिंग मैकडोनल्ड बर्गर्स। तो आउटब्रेक हुआ है यूएस में। तो more than 500 outbreaks of diarrheal disease were reported across India 2023. तो एस्टेरिचिया कोलाई include fever of more, तो बैक्टीरिया है of more than 102 degree Fahrenheit persistent diarrhea. तो taxing industrial alcohol, here this is regarding the alcohol or जो intoxicating liquor production होता है। तो one major challenge here is regarding the ambiguity with regard to the words or the naming कि क्या उनका actual meaning है, and second is regarding the ambiguity with regard to the inclusion in the union and state list। तो overlapping entries exist करती हैं यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी करंटली जजमेंट दिया है कि जो स्टेट्स है दे कैन टैक्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल। जजमेंट इसकी बात करते हैं केस हिस्ट्री एंड बैक स्टोरी। तो 1989 में देयर वाज अ जजमेंट कि इंटॉक्सिकेटिंग लिकर स्टेट्स जो है दे ओनली हैव द पावर टू रेगुलेट द इंटॉक्सिकेटिंग लिकर मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और सिर्फ सेंटर ही रेगुलेट कर सकता है इंडस्ट्रियल अल्कोहल को। तो यूज की बात हो रही है, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर इज जस्ट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, एंड जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है इट इज मेंट फॉर द वेरियस इंडस्ट्रियल पर्पसेस एज द टर्म सजेस्ट, चाहे वो मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग हो गया या ऑल दीज एरियाज रेगुलेटेड एरियाज। तो यूपी ने लाइसेंस इम्पोज करा ऑन द डीनेचर्ड अल्कोहल ऑब्टेन फ्रॉम डिस्टिलरीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है regarding this कि state can levy taxes on the industrial alcohol। तो overlapping entries है in the 7th schedule of constitution। तो entry 8 of list 2 gives state the power to regulate, while entry 52 of list 1 allows the center to regulate to extent as a whole to extent। So resolving this ambiguity is required। Federal balance। तो Industries Development and Regulation Act 1961, alcohol and fermentation industries। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज है where the center can exercise complete control under the Industries Development and Regulation Act 1961। The state legislatures they are denuded of their powers to pass a legislation or to take any action relating to them। The regulation term is mentioned here as the legislating,